This conference will now be recorded. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to my Guru Tullilu, VV Subba Rao Garu. And this topic is very close to him because he is a sports personality. Himself is a wrestler also, if I am not wrong. The No, I'm current a topic, weightlifter. he is a I weightlifter, was a weightlifter. Athlete. weightlifting. Okay, okay, whatever it is. So, Yeah, he's into sports and he's into weightlifting. Many were asking us why you are not interfering or doing a show on sports. Let me remind you, we have done a series of sports. How gross commercialization of sports is happening, destroying the spirit of sportsmanship. Again, at Jantar Mantar, our Indian wrestlers who brought fame, name, and fame to the sport as well as to the country, equally greeted by our Honorable Prime Minister and all other concerned. Today, they are on the roads stating that sexual harassment is being done by the Wrestling Foundation of India chairperson, who happens to be the member of parliament. 6 times he has won from Uttar Pradesh. Only once for a brief while he had gone to Samajwadi Party, but he is there with Bharatiya Janata Party and is a strong Hindutva movement. Even Babri Masjid demolition time, he was there very much and is a 6 time member of parliament for 10 decades or so. I don't know, more than a decade, 10 years. I'm sorry. He has been the president or chairman of the Wrestling Foundation of India or Wrestling Association of India, whatever you say. But today he is facing the heat from his own wrestling champions. They are stating that he has indulged in sexual harassment. This is mind boggling. What is happening to the sports? Where is the sportsman spirit? Supreme Court had to intervene and tell the government to register an FIR. Till proved no one is guilty. This has to be borne in mind. We are not here to judge anyone, but such a famed sports, the wrestlers who have won medals and laurels for the country, and the man himself, a 6 time member of parliament, heading this organization for the last decade, what is happening in between them? What is the truth? Because it is bringing a bad reputation to the game wrestling as well as also to the sport and India as a whole, because he happens to be the vice president of that World Wrestlers Foundation representing Asia. So this is bringing a disrepute. Still, the stalemate exists. I don't know in Man Ki Baat why Prime Minister doesn't address such type of issues. The issues pertaining to people of India, suffering of India, he doesn't, and he doesn't come on into press. I mean, address to press conferences also. So we have taken up this issue. First, a forward from Subbarao, then I'll show you some videos and all as usual. Sir, what is happening to the sports in India, sir? How long this mess goes on, tarnishing the image? yeah, it's a very unfortunate thing, and for months together, the champions from the wrestling arena are struggling to bring out their voice, and people in Delhi are resisting or refusing to listen to these voices. It's very unfortunate. Only two games. One is hockey. More than hockey, it was wrestling. Right from pre-colonial era, India is known for wrestling, and Indian wrestlers were world heroes. Later, the hockey joined. But today, we all talk of our heritage and all other things, but we seldom give time to discuss, think, and bring reforms in sports arena, particularly in the sports management systems. Most of the sports and their federations are under the control of politicians, business people, and administrators, bureaucrats. I am not against all these three sectors,
but I am against those who exploit the situations, who exploit not only the positions but the young budding sports person, particularly the women. It's a shame. It's time to think of a reform, and come what may, the wrestlers always brought laurels to this country. Then And why here we the are irony not? is, sir, irony is Mr. Brijbhushan himself is a wrestler. In Khada Ayodhya, he has come up through that way, and it is his first love, and a six-time member of parliament also. I don't understand where things have gone wrong. And do you think the wrestlers and Sakshi Malik and Fogart, who got laurels, women wrestlers, simply come out and label charges, sir? Is it possible? No, no. Even if someone Let's. says, Yeah, yeah. No one. Comes in that fashion, disgracing themselves with such, you know, images. But whatever it is, we need to have a monitoring system, a reporting system for all these board of governors, not only in the sports arena, but in every sector in this country. If we want the country to be healthy, progressive, we need to think of it. Prime Minister is trying to bring out some initiatives, but still, what I feel, he's still surrounded with those vested interest groups who are probably not giving him the clear picture of the ground realities. With so much of media transparency in the system, that why we are failing is a big question. We need to understand these things. We need to honor, respect the budding sports person, particularly from the subgender. Please, sir. या आई जस्ट ट्राई टू, क्योंकि ये ऐसी कुश्ती पोटी कुश्ती जो है हमें मेडल जिताई है, हमारे देश की शान बढ़ाई है हॉकी के साथ। लेकिन आज वही कुश्ती के पहलवान ब्रिजमोशन जी जो 6 टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और खुद ही एक कुश्ती एक पहलवान है, उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं। तो हमें थोड़े, जब तक कोर्ट ये निर्धारित नहीं करता कि आपने जुर्म किया है, कोई दोषी पाया नहीं जाता। अब आजकल भी देख रहे हैं, दोषी पाए जाने के बाद भी जिस तरह गवर्नमेंट रेपिस्ट को या उस तरह छोड़ दिया जा रहा गुजरात में, और एक आईएएस ऑफिसर को जो खत्म किया है, वहां पर पॉलिटिशियन को भी बाहर छोड़ दिया गया इन बिहार में। तो ऐसे समय में हमारे हमारे पहलवान, महिला पहलवान जो है, रेप और जो सेक्स की जिस तरह उनके साथ बर्ताव किया गया, इसके खिलाफ वो लोग आवाज उठा रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली पे। क्यों सरकार चुप है? सुप्रीम कोर्ट तय बोलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी एफआईआर या इस तरह क्यों आगे जांच नहीं जा रहा? कितने दिन हम इसको लेके हमारी देश की शान और हमारी देश की जो कुश्ती है, कुश्ती जैसी खेल को बदनामी के दौर पर ले जाएंगे? क्या ये हमारी नाक कटवाने की जैसी नहीं है? क्यों सरकार चुप है? मन की बात में प्रधानमंत्री ऐसे चीज क्यों नहीं लेते? पुलवामा हो या कुश्ती हो या उनकी खुद की डिग्री की जब बात आती है, ये सब तय करने के बाद ही दूसरे कुछ बात करनी चाहिए ना। हम जो चाहिए वो नहीं कह सकते ना। ये हमारी लोकतंत्र है। लोगों की तकलीफ दूर करने की ही उनकी उनकी उनको चुना है हर कोई। तो हम थोड़े वीडियोस में बताने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, क्योंकि ये लोग काफी दिन से रोड पे हैं। गलत दिखता है। मैं पहले ये वीडियो को प्ले करता हूं ताकि ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा।
7 लड़कियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ रिपोर्ट की रिसीविंग दे दी हमें, लेकिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या प्रेशर है? क्या चीज आगे आ रही है, हमें नहीं पता। जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा और चाहूंगा ऐसी जिंदगी जीने के पहले कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। For more informative videos like this, So keep we are watching. just trying to, because I'm trying to play certain videos which we have received. It was history about him. ये बकवास करने की नहीं बना है, हमारी बात को जारी है। ये बकवास मत करो किसी के साथ, हमारी बात को जारी है। So they are against the media, also stating that it is go the media, go back. और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तो जानता हूँ, सुबह दिन रात नहीं देख सकता, वरना ऐसा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मां बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे और लोग। आत्मसम्मान जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे चूर चूर हो रहा है हर दिन की। हम खिलाड़ियों को जब मैच तब तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, गृह मंत्री, हर कोई, राष्ट्रपति जी हमें सम्मानित करते हैं बड़े बड़े अवार्ड से, लेकिन जब हम सड़कों पर बैठते हैं अपनी असली चीजें बोलते हैं तो सब छुप जाते हैं, कोई बोलने को रेडी नहीं होता इस चीज के ऊपर। तो दुख ये होता है कि हमारा आत्मसम्मान, मान सम्मान तब तक है, 2 दिन के लिए है, जब हम मेडल जीत के आते हैं, फोटो खिंचवाने तक हमारा मान सम्मान। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तो जानता हूँ, सुबह दिन रात नहीं देख सकता, वरना ऐसा करो। प्रधानमंत्री जी, आप कहाँ गए? जब मेडल जीत के आते हैं वो आरोप कर रहे हैं आपसे, आप मिलते हैं गृह मंत्री और हमारे राष्ट्रपति, लेकिन जब वो लोग रोड पे आते रहे समस्या लेके, आप क्यों चुपचाप हो जाते हैं? वो आपसे प्रश्न कर रहे हैं। दे आर आस्किंग यू, व्हेन दे विन मेडल्स यू इनवाइट देम, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, but when they have some problem come onto the roads, why are you not listening to them? So this is a big in ब्रजभूषण पर लगे आरोपों पर चुप, पुलवामा के खुलासे पर चुप, अदानी महाघोटाले पर चुप। क्या देश पीएम मोदी को मन से माफ कर पाएगा? Oh, this is another political rhetoric. I'm just trying to show you some videos before I go to our honorable guest. ये तो मेरे ही परिवार की है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तो जानता हूँ,
सुबह दिन रात नहीं देख सकता, वरना ऐसा करो हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे और आत्मसम्मान जो है ना वो बिल्कुल ऐसे चूर चूर हो रहा है हर दिन की। हम खिलाड़ियों को जब मेडल लेके आते हैं तब तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, गृह मंत्री, हर कोई, राष्ट्रपति जी हमें सम्मानित करते हैं बड़े बड़े अवार्ड से। लेकिन जब हम सड़कों पर अपनी असली चीजें बोलते हैं तो सब छुप जाते हैं, कोई बोलने को रेडी नहीं होता इस चीज के ऊपर। तो दुख ये होता है कि हमारा आत्मसम्मान, मान सम्मान तब तक है, 2 दिन के लिए है, जब हम मेडल जीत के आते हैं, फोटो खिंचवाने तक हमारा मान सम्मान। और विनेश See, Pradhan Mantri ji, you have to respond. What is this happening? मन की बात कहते हैं आप, लेकिन लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे प्रधानमंत्री जी? यही पूछ रहे हैं हमारे। మేము ఒలింపిక్ మెడల్ సాధిస్తే ఇంటికి పిలిచారు, మరి మా బాధ చెప్పుకుంటామంటుంటే ఇప్పుడు ఎందుకు పిలవరు? రెజ్లర్ సాక్షి మాలిక్ ప్రధాని మోదీని అడిగిన ప్రశ్న ఇది. రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు బ్రిజ్భూషణ్ సెక్షువల్ గా హెరాస్ చేస్తున్నాడు అని ఢిల్లీలో రెజ్లర్లు పోరాడుతుంటే వాళ్ళ గోడు వినేవాళ్ళు లేరు. 5 నెలలు అవుతోంది, ఇప్పటికీ బ్రిజ్భూషణ్ మీద ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయలేదు. ఈ బ్రిజ్భూషణ్ చరణ్ సింగ్ యూపీ బీజేపీ ఎంపీ, ఇతని మీద 4 క్రిమినల్ కేసులు సహా 30 కేసులు ఉన్నాయి. దావూద్ తో సంబంధాలు ఉన్నాయన్న తీవ్రవాద కేసు ఉంది. ఓ హత్య చేసినట్లు స్వయంగా ఒప్పుకున్న ఇతనికి బీజేపీ టికెట్ ఇచ్చింది. రెజ్లర్స్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుని చేశారు గెలిచాక. సాక్షి మాలిక్, వినేష్ పొగట్, బజరంగ్ పూనియా వీళ్ళు ఖాళీ చేతులతో ప్రత్యర్థిని మట్టి కరిపించే మల్లయోధులు. వీళ్ళకి బ్రిజ్భూషణ్ ఒక లెక్క కాదు, కానీ చట్టాన్ని గౌరవిస్తున్నారు, న్యాయం కోరుతున్నారు. 7 బాధితుల్లో ఓ మైనర్ ఉన్న ఆ ఎంపీ మీద నో ఎఫ్ఐఆర్. సుప్రీంకోర్టు అడిగినా కేంద్రం నుంచి నో రియాక్షన్. గోదీ మీడియాలో నో కవరేజ్. సచిన్, విరాట్, సైనా, పివి సింధు అంతా సైలెంట్. ఎందుకు ఈ భయం? వీళ్ళ విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం, వీళ్ళ పోరాటాన్ని షేర్ చేసుకోలేమా? షేర్ దిస్ వీడియో, బీ దేర్ వాయిస్. So I'm trying to play as much as I think this already have appeared, Shakti, and he also states that I am innocent. Oh, they've already removed the pages as and when we try to. And now the reactions, how PT Usha reacted. She is also sports personality. Tarnishing the image of India, IOA President PT Usha blasts Indian wrestlers for staging protests on streets. Coming down heavily on the aggrieved wrestlers, Indian Olympic Association President PT Usha said the grapplers protesting on streets amounts to indiscipline and is tarnishing the country's image. Decorated wrestlers Vinesh Fogat, Bajrang Punia and Sakshi Malik are the 3 central characters in the renewed protests against Wrestling Federation of India President Brijbhushan Sharan Singh, who has been accused of sexual harassment and criminal intimidation by the grapplers. So this is how she is reacting on now. How they have other actress reacted to PT Usha. Pooja Bhatt reacts to PT Usha's comments in harassment case. Says our athletes left with no choice but. Pooja Bhatt came out in support of wrestlers protesting against Brijbhushan Sharan Singh. The actress also slammed Indian Olympic Association chief PT Usha for criticizing the wrestlers. Pooja Bhatt is the recent actress to join bandwagon of other eminent personalities to voice their opinion over alleged sexual harassment by Wrestling Federation India boss Brijbhushan Sharan Singh. The never-ending tussle between the Indian wrestlers and Wrestling Federation of India President Brijbhushan Sharan Singh and the wrestlers have gained momentum on social media in the last few months. Bajrang Punia claims Delhi police cut power water at Jantar Mantar after FIRs against WHI chief. What is this nonsense? This is like Tamil Nadu. एक्ट्रेस गायत्री रघुराम ने छोड़ी भाजपा, कहा पार्टी में महिलाओं सुरक्षित नहीं. So this is also big news coming from Tamil Nadu on the lines of this protest which is happening. Lost faith protesting wrestlers after Delhi police says will file FIR against. So they are saying they are losing faith. Very shame. Even Kejriwal visited the site. Hurts to see our athletes on streets demanding justice. Olympic gold medalist Neeraj Chopra on Friday extended his support to the protesting wrestlers and tweeted, "This is a sensitive issue and must be dealt with an impartial and transparent manner. Pertaining authorities must take quick action in order to ensure that justice is served." On Thursday, the Indian Olympic, that I have already said, how she commented.
When will BJP's women minister open their mouths on misbehavior with daughters? मोदी कैबिनेट नारी शक्ति, ये भाजपा की महिला मंत्री सिर्फ मोदी की गुलामी के लिए है। दिस इज अनदर पोस्ट। देश की महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के खिलाफ कब मुंह खोलेंगी? दिस इज अनदर post which is going viral. FIR against Brijbhushan, this is already done, but they say they are not satisfied. तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी मिला के अपने सांसद के पीछे खड़ी है, देश के पहलवानों के साथ नहीं। क्या ब्रजभूषण शरण पे बहुत प्रेशर है क्या सरकार पे? पता नहीं, ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि भाई मुझे लगता है कि कोई प्रेशर होगा इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक तो मुझे लगता है कि अगर कोई और होता तो बहुत बड़ा मतलब अभी तक वो जेल में भी होता, उसके ऊपर कार्रवाई भी होती, हर चीज होती है। डेफिनेटली उनको इस चीज का फायदा मिल रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो सांसद हैं और गवर्नमेंट का प्रेशर है या गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है या उनका गवर्नमेंट पे प्रेशर है, ये हमें पता नहीं है किसका किस पे प्रेशर है। पैसे की ताकत है, वो सब दिखती है। हमारे पास सच्चाई की ताकत है, उस सच्चाई की ताकत में हम जी जान से लड़ेंगे और हमारा पूरा देश हमारे साथ में। भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के पदक विजेता पहलवानों ने रविवार से एक बार फिर जंतर मंतर पर धरना आंदोलन शुरू किया है। आज सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग इन खिलाड़ियों ने की है। बृजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप कुछ महिला रेसलर्स ने किया था। उसके बाद 3 महीने पहले जनवरी में ये खिलाड़ी इसी जगह जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। तब इस मामले की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन आज 3 महीने के बाद इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सांसद बृजभूषण को सरकार बचा रही है? आखिर सरकार की ओर से या क्रीड़ा मंत्रालय की ओर से 3 महीने के बाद भी कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब जानने के लिए हमने इन खिलाड़ियों से बात की। आइए देखते हैं। लड़कियां सामने आके बोल रही है कि भाई हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उसके बावजूद पुलिस बोल रही है कि हम कमेटी से रिपोर्ट निकलवा रहे हैं। अरे लिखित में आपको दे रखा है भाई, आप उस पर एक्शन लीजिए। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट करी जिसमें एक माइनर है, तो उस पर एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो कमेटी ने अपना काम किया ढंग से? मुझे नहीं लगता ढंग से काम किया कमेटी ने। जब कमेटी आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में लिखा था कि भाई किसी एक सदस्य ने कि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो उस पर साइन करने में समर्थ हूँ कि भाई वो रिपोर्ट उसमें खिलाड़ी की रिपोर्ट है जो उसके ऊपर नीचे किया गया है, ब्रजभूषण के पक्ष में किया गया है, ये चीजें गलत है। तो उसका जब उसके जो सदस्य है वही ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो खिलाड़ी कहाँ से न्याय की उम्मीद लगा सकते हैं उनसे? क्या ब्रजभूषण शरण का बहुत प्रेशर है क्या सरकार पे? पता नहीं, ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि भाई मुझे लगता है कि कोई प्रेशर होगा इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक तो मुझे लगता है कि अगर कोई और होता तो बहुत बड़ा मतलब अभी तक वो जेल में भी होता, उसके ऊपर कार्रवाई भी होती, हर चीज होती है। कब तक आप यहाँ पे बैठेंगे? जब तक न्याय नहीं हो जाता है। हम ना कोई बीजेपी से है, ना कांग्रेस से है, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, ना हम हरियाणा से हैं, ना हम पंजाब से हैं। हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, हमें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। और रही बात बीजेपी से है, डेफिनेटली उनको इस चीज का फायदा मिल रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो सांसद हैं और गवर्नमेंट का प्रेशर है या गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है या उनका गवर्नमेंट पे प्रेशर है, ये हमें पता नहीं है किसका किस पे प्रेशर है। पैसे की ताकत है, वो सब दिखती है। हमारे पास सच्चाई की ताकत है, उस सच्चाई की ताकत में हम जी जान से लड़ेंगे और हमारा पूरा देश हमारे साथ में, और आप लोग जो साथ में हो तो हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और आपके माध्यम से भी मैं सभी जितने हमारे एक रेसलिंग के नहीं जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जैसे कोई भी गेम हो, उनसे भी हम समर्थन मांगेंगे। उनको भी बोलेंगे कि ये कुश्ती की लड़ाई नहीं है, आने वाले सभी खेलों के भविष्य की लड़ाई है ये। और जितने भी हमारे संगठन है, चाहे वो महिला संगठन है, किसान संगठन है, पंचायत है, आप है, हम सबसे समर्थन मांगेंगे कि खिलाड़ियों की ये लड़ाई है, इनमें सब आप लोग सहयोग करिए
क्योंकि अगर अब हम नहीं जीत पाए तो ये जो अब पर्दे के पीछे हो रहा है ये खुलेआम होगा, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर हैं जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चे। जो 15 लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हरासमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए, उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो, अगर मिली है तो ब्रजभूषण के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। 12 लड़कियों ने वहां जाके बयान दिए थे और अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए। तो वही विनेश वाली बात है, या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहां जाके कुछ भी बोला। तो ये है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग से ही बायस थी। वो उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, हम 3 महीने से फोन कॉल से मैसेज से हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज हमें रिपोर्ट में दीजिए, क्या आया है, क्या आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष पे आप पहुंचे हो। किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, फोन उठाने तक हमारे बंद कर दिए। अब जब उनको ये पता लग गया कि हमने पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, तब ये लोग प्रेशर में रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो पहले ये रिपोर्ट क्यों रिलीज नहीं की गई? ये तो स्पष्ट है कि सरकार एक्शन नहीं ले रही, ये तो स्पष्ट है कि सरकार एफआईआर नहीं लिखवा रही, ये तो स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर है, एफआईआर उसी समय लिखी जानी चाहिए थी। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी मिला के अपने सांसद के पीछे खड़ी है, देश के पहलवानों के साथ नहीं। क्या सर आप फेडरेशन में भी नहीं है, क्या लगता है कि फेडरेशन में ऐसे जो आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ी कि ये सही है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ये तो जांच का विषय है, परंतु कोई भी महिला गलत आरोप देश के अंदर ये तो देश के सितारे, चमकते हुए सितारे, इनकी बात के पर सरकार को विश्वास करना चाहिए, निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, एफआईआर सबसे पहले लिखी जानी चाहिए। मैं पूर्व भारतीय टीम का चीफ कोच भी रहा हूँ 2007 तक, ओलंपियन में खुद रेसलर हूँ। तो अभी जो बच्चे आए हैं, इन्होंने जैसा मैंने देखा कल धरने पे बैठे, तो हम भी उनको सपोर्ट करने आ गए हैं। और मेरी तो पर्सनली है ना, बच्चों की मानी जाए, नहीं ब्रजभूषण की मानी जाए, उन बच्चियों से जाके कैंप में उनका टेस्ट ले जाए तो उनसे भी पता चला जा सकता है आपको। वो चीजों का ऐसी बात नहीं है, सरकार चाहती है फेयर करना तो किसी भी तरीके से फेयर कर सकती है। लेकिन मेरा सवाल है कि सरकार कर सकती है, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुप्पी साधी है, खेल मंत्री का भी कुछ बयान नहीं है, और ये जो ब्रिजभूषण है वो बीजेपी के सांसद है, तो आपको लगता है कि ये बीजेपी उनको डिफेंड कर रही है? ये तो मतलब डिफेंड मतलब ऑफिशियली ना कर रही हो, पर अगर उस पर कार्रवाई, अगर कोई क्रिमिनल है या बच्चे कह रहे हैं और उसकी जांच भी नहीं होगी तो ये तो डिफेंड ही होगा, इसको मानना तो जाएगा। अब उन सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे तो मानना तो जाएगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ और मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट भी आ गई तब भी मेरे पे कार्रवाई नहीं होगी, तो मेरी कोई तो पहुंच है ना। आप ये बताओ, बच्चों ने जो इलीगेशन लगाए हैं, बच्चे ये कह रहे हैं अगर ये झूठे हों तो हमारे अगेंस्ट कर दो, हमें बंद कर दो, या उसे बंद करो। या एक अभी आपको बच्चों ने बिल्कुल क्लियर ये कहा है, या तो हम गलत हैं भाई हमें इल्जाम लगा रहे हैं, या वो गलत हैं, दोनों में से एक गलत है। सरकार इतना ही कर दे, अगर हमारे दोनों में से बिठा के एक गलत साबित कर एक को बंद कर दे, चाहे हमें कर दे चाहे उन्हें कर दे। क्योंकि देरी क्यों हो रही है? 3 महीने से, पिछले जनवरी को बच्चे आए थे, खिलाड़ी आए थे, तो अभी 3 महीने हो गए, 3 महीने भी रिपोर्ट नहीं आती, उसके ऊपर ये बच्चों को देखो, इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, धरने प्रदर्शन का एक्सपीरियंस नहीं है। इवन आप पत्रकार, आप जैसे कुछ क्वेश्चन इधर से उधर से पूछ लोगे तो वो उसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे भूल मिल जाएगी, जैसे लंबा खिंचेगा खत्म हो जाएगी और फिर अपने जैसा था चल जाएगा, बस इसलिए। Yeah, I think now there is another last one. Just Delhi police informed Supreme Court that they will today. This is on when was this? This is 4 days back. So right. Yes, sir. I think they are very clear. They are trying to say either we should be wrong or he should be wrong. If we are wrong, put us behind the police station, behind the bars. How do you look at the scenario now? Where is the sportsman spirit now? Very, shameful incidents happening in Delhi. I feel sad. 3 months, the Yeah, it's committee doesn't give a yeah, report. yeah.
when a conflict arises, uh, one of the two will be guilty. But how do we prove it? That is major. So, unfortunately, we do not have a tracking monitoring system on the behavior aspects of the board of governors or board directors of the sports councils, sports federations. Particularly, some of the sports in this country are totally ignored and neglected. They are just surviving because somehow, out of their own indigenous genetic strength, they get the medals in the international arena. So India flag is flying there. So government has to spend some time, one day in Rashtrapati Bhavan to give them the laurels. And media will spend some time putting up a column and then forget about it. And these days, a lot of business people are entering into the sports because they have a lot of benefits out of the CSR funding, and they do enjoy the positions in such federations. Unfortunately, last 75 years, the sports has been reduced and pushed into the private sector, and today you do not have good encouragement and unhealthy encouragement by the government system. The lower level cadre sports, district level, state level, the sports person themselves have to put their bill to participate in the events. So that is the status. I do not know, why such an opaque system in the country. Sports had to get a decent recognition as a field of science, a field of education. Sports are always, categorized on the basis of the revenue they generate. Cricket, it's a good game, but intervention of the business people undermined the spirit of the sports and also led to killing of ethics, values, morals in the sports field. It's nice. It's really, I feel, pride that Brij Bhushan, being a wrestler, could get into a sports arena and 6 times a parliamentarian. What is his contribution in bringing out a sports policy in the parliament? Except for sitting in the federations and enjoying the perks and the cream of the positions, except for maybe I do not want to comment on any other issues, but I can say boldly that his contribution toward the sports policy is nil. And he is associated with BJP for a long time. BJP could not influence the party on sports policies. Is it because the wrestling and weightlifting and other sports you have very marginal vote bank? Because you only look into the vote banks on the caste system. So, what is the reason for this? There are no articles in the media.
You see, we need to come out with some analytical articles on such critical, problematic issues. And the great lady P.T. Usha, I have a great respect and I regard her sports career, but I never appreciate her statement on the wrestlers. What is that? She has introduced any policy? Is a white paper on sports policy in the parliament? Anything on for a debate, healthy debate? Nothing. After becoming the member of parliament, Rajya Sabha, she only started crying of encroachment of her land which was given by the government, taking the advantage of the position. What is this ridiculous things? You could have made a FIR if you if you had gone to the police and requested for the FIR. I think today you might have already joined the wrestlers at Jantar Mantar protesting for that. Being a woman, giving such underrated statements is not a good indicator. A sportsman has, over a period of time and age, matures. A sportsman is the best person who understands the integration. We need to come out of these things. We had a very good Olympian from Madhya Pradesh, the hockey player. I'm sorry, I can't remember his name. We had an opportunity for several. But Bridgemore, 6 times a parliamentarian, never spoke of sports, never discussed actively on the sports budget, never discussed anything on the problems of the sports. He may be a great wrestler at his ground level. Probably that heroic, image made him a public figure. He should return it back with sincerity. I appeal to the Prime Minister, to all the boards of the sports federations. Please find a mechanism for a monitoring. Try to resolve the issues at the initial stages itself. It happened with women cricketers in Andhra Pradesh. I do not want to name the person who was harassing the women. Okay? And this is going to continue if this male chauvinism continues in the ruling parties. And today, I don't see any spirit in the opposition parties because the values and philosophies have died, eroded. We need to come out. We need to stand boldly. All the sports persons across the country, please send mails to PMO's office. It's my humble request. All the sports persons, sports coaches, and like-minded members in the sports federation and concerned citizens, flood the email box of PMO's office requesting the authorities to resolve the issue at the earliest. This is my humble request and a suggestion. Thank you so much, Shivaprasad. Thank you. Wonderful, sir. Wonderful, sir. Wonderful, sir. Let sports be apolitical. Let that sportsman spirit help us to survive in a better way. When we say extracurricular activities along with academics, it is the sports which plays an important role. The physic, and with that physical exercise or whatever physical exertion goes your mind into that to win. If you lose, how to win?
that shapes up a personality, an individual, that characterizes an individual. That is the beauty of sports. And that too, wrestling winning, our wrestlers are winning laurels, medals for the country. Instead of expanding it, how is that it is becoming controversial? I'm demanding the Prime Minister, why these things doesn't come up in Man Ki Baat? They are very clear. Only one will be guilty. Either we who are accusing Mr. Brijbhushan or Mr. Brijbhushan himself. So now who is the guilty? What happened to the committee set up 3 months ago? Why it's taking so much of time? And Supreme Court also should come to the rescue immediately. And how is that they are trying to again influence them by removing power and all? What is this going on? So in the very first stage, it is creating doubts. We are not here to judge whether Brijbhushan Ji, six-time member of parliament, himself is a wrestler. He's a victim, accused, or after trial, God knows. So we are not here to judge. But in doing so, in allowing such a movement at Jantar Mantar, the government has failed to respect the sports community. And see how PT Usha, how she is trying to speak. Just because she's got Rajya Sabha MP and she's heading the Olympic Association, it should not be. And where are the women ministers? You should have come to the rescue. At least you have gone to the wrestlers. You should have spoken to them. What is wrong? What is wrong? Dispute resolutions can happen anywhere. Need not be courts or police. You could have taken the lead, having elected. You could have gone to them. Where are you? Why are you silent? That beats my intelligence. Even our honorable president is a woman. We are celebrating that. But on the ground, when they avoid those who have won the medals, laurels for the country, coming on the roads, agitating at Jantar Mantar, government ignores, all the organizations ignore. Now the support is building up. Where are Tendulkars? Where are Virat Kohlis? Where are other sports personalities? Because as Subba pointed out, we wanted transparency and accountability in the sports arena, because it is such a big character molding aspect in one's life. If you let it go this way, see IPL and all, how commercial it has become. They are killing the sports. Players are auctioned. Black money is coming into India in the name of funding sports, sponsors of the teams, ruining the sportsman spirit. And is this the reason why these things keep happening as is happening with the wrestlers now? Sir, please, sir. Most unfortunate thing is for every common issue, why High Court or the Supreme Court has to intervene Yep. and Yes. direct the governments, executives, remind the executives and the government to implement it. This is a very pathetic thing. And second thing, there are vibrant parliamentarians, may not be presently with the ruling party, but with the opposition party. I remember Renuka Chaudhary, the firebrand of TDP. Yes. Where is she now? Just because she does not have a power, she is not coming out for a public cause. People should come out. It's time to remind the system that still you are active in the public interest issues. Please come out. I appeal to all the vibrant parliamentarians, maybe ex, maybe active, all parliamentarians, legislators, concerned citizens, please come on. Let us resolve this issue at the earliest. Thank you, sir. Thank you, Dr. Chupra. Yeah, still proved no one is guilty. This is what we say. We are not here to judge. जब तक आपका जुर्म ये नहीं किया जाता है हमारे न्याय स्थल से, तब तक खाली आप आरोपी है.
నేరం నిరూపించే వరకు మీరు నేరస్తులు గారు, కేవలం ఆరోపించబడ్డవారే. ఎందుకంటే we want everything should come out as players are demanding either we are guilty or Mr. Bhushan is guilty. Now who is guilty? Mr. Prime Minister of India and the Cabinet Secretary, Union Minister of Sports. Is it not sports, and that too wrestling, which has become a big issue not just in India, worldwide, because of your silence, because the law and order could not proceed at the earliest 3 months back itself before setting up the committee. At least even 3 months now, what is the committee doing? Is it not bringing disrepute to the sports as well as wrestlers? And not only that, is it not maligning the administration and India's face in the world? It has to be borne in mind. Silence will not allow when people like award winning people, when they have come onto the roads, instead of clearly attending to the issue, finishing it at the very budding stage, you have allowed this issue to go beyond, to become national and international issue, shaming the country's sports once for all. This is very sad day. Thank you very much, sir. Do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels in larger public interest. And we do have DRTSPR channel Rumble as well as BitChute. Do support and subscribe. They are all in larger public interest, and anyone can participate in our show. Prove us wrong, and the wonderful guests will always be there to discuss, debate, differ. That is the beauty of democracy. Thank you very much, sir.